नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? So now let's start today's session. So if you have any doubt in the previous session, please tell me in the chat box. ठीक है, chat box available है, तो please I can see your chats. Okay, so let's start today's session. So in the yesterday session, we completed the if statement. ठीक है, if statement, else statement हमने complete किया था. Now it's time to complete the elif statement. तो मैं लिख देता हूँ पर यहाँ पे मैं लिखूंगा एल इफ. सो आपको पता रहे कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है ना, जो अभी ज्वाइन किया जिन्होंने. ओके, एल इफ. सो वी आर ओके. लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. शेयर स्क्रीन, स्क्रीन नंबर 1. और ठीक है जी, तो आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन. ठीक है, दिख रहा है, ठीक है. So yesterday we saw the if and else, right? So now we are going to work with the elif structure. अब एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं. Let's take a small program which tests the grade of a student. देखिए, प्रोग्राम तो बहुत बना सकते हैं, ठीक है. Let's start with simple one. सिंपल से स्टार्ट करते हैं. वेरी सिंपल प्रोग्राम कि जैसे मान लीजिए, लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट है एंड जो स्टूडेंट है हमारे पास, उसके पास कंसीडर 90 मार्क्स हैं. सो 90 मार्क्स ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू 90, अगर कुछ ऐसा है देन वी विल से इट्स ए ग्रेड. ओके, एंड इफ लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 80 वी कैन से इट्स ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, देन वी कैन से बी ग्रेड. और सिमिलरली फॉर 70 सी, फॉर सिमिलरली फॉर 60 डी, एंड लेस देन 60 ई ग्रेड. ओके, सो दिस ये है प्रोग्राम. So let's start with this one. So first of all, let's take the marks. Okay, marks, right? Input, enter the marks. Okay, enter the marks. यहाँ पे मैंने मार्क्स एंटर करवाए, राइट. ठीक है, अब जो मैंने मार्क्स एंटर करवाए तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस चीज में है. कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ दिस मार्क्स? यस, एनीवन? गुड आस्किंग. कंसीडर मैं 90 डाल देता हूँ. So I'm getting this string here. So this is string type. This is not the integer. And in the Python, if I compare, consider मैं इसमें compare करता हूँ. If I compare a number with the string like मान लीजिए 90 आ गया, इसमें string में आ गया in the 90, and if I compare it with the 90 ये तो syntax ही लगा. तो मैं सिर्फ compare करता हूँ. I can see in okay ये नहीं आएगा. I can see this greater than or less than whatever supported not supported between instances क्या होता है? Objects of string and integer. मतलब इसमें नहीं चल सकता ही. So we need to convert this
स्ट्रिंग टू इंटीजर, तो उसके लिए क्या करते हैं, वेरी सिंपल, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू मार्क्स इक्वल टू, मैं ये नहीं कह रहा कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक नया वर्जन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम एक एक चीज को, एक एक लाइन को बिल्कुल तरीके से समझना पड़ेगा। वट एवर यू लर्न इन दिस 5 days, तो एक अच्छे से लर्न करना है अपने को, भले ही हमें थोड़ी चीजें लर्न हुई है लेकिन वो अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग क्या है, वेन एवर वी से कन्वर्ट, भाई इसका मीनिंग ये नहीं है कि आई एम कन्वर्टिंग दी स्ट्रिंग टू इंटीजर, उसका मीनिंग ये नहीं है। ठीक है, इट्स मीनिंग इज, इसका मीनिंग है कि वी आर क्रिएटिंग अ न्यू इंटीजर वर्जन ऑफ दैट स्ट्रिंग, अगर वो कन्वर्टेबल है। इसको ध्यान से समझना अपने को। मान लीजिए मैंने इंटीजर में, पहले मैं इंटीजर को समझा देता हूँ कि इंटीजर होता क्या है, मतलब ये जो इंटीजर लिखते हैं, सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस इंट। ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं। मैं एक नई नोटबुक ओपन करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस इंट। देखिए अगर मैंने लिखा a इक्वल टू 90, a 90 हो गया। ठीक है, इफ आई यूज इंट a, आई एम गेटिंग दी 90। देखिए 9, दिस इज दी स्ट्रिंग, दिस इज दी इंटीजर। अगर आप खाली a को प्रिंट, देखिए दिस इज दी न्यू वर्जन ऑफ ए, इसको हम कहेंगे न्यू वर्जन ऑफ ए, न्यू वर्जन ऑफ ए। ठीक है, अगर आप ए को देखोगे तो स्टिल दिस इज द स्ट्रिंग, ये देखिए फिर से स्ट्रिंग ही है, अभी भी स्ट्रिंग ही है, बट दिस इज अ वर्जन, सो वी कैन टेक दिस वैल्यू अगेन ऑन न्यू वेरिएबल पे भी ले सकते हैं, सॉरी न्यू वेरिएबल पे भी ले सकते हैं, या फिर सेम वेरिएबल पे भी ले सकते हैं। आई कैन सी दिस इज द इंटीजर वर्जन। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी ध्यान से कि इंट करता क्या है। अब तक आपने जो अंडरस्टैंड किया होगा, यू अंडरस्टूड कि हाँ कन्वर्ट करता, नहीं भाई कन्वर्ट नहीं कर रहा, इट क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ दैट स्ट्रिंग इफ दैट इज कन्वर्टेबल। अगर कन्वर्ट, अब इफ कन्वर्टेबल का मीनिंग क्या है, कंसीडर आपने इंटीजर के अंदर हेलो डाल दिया, तो देखिए दिस इज नॉट कन्वर्टेबल, दिस इज हेलो जस्ट अ स्ट्रिंग, इट्स नॉट कन्वर्टेबल। ठीक है, 90 को तो आप समझ सकते हो कि 90 100 यू कैन कन्वर्ट इट, ये तो कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक स्टूडेंट लिखा है, नयन ने लिखा है कि वी विल कन्वर्ट, ये कन्वर्ट ठीक है, आप लेजी सेइंग में यू कैन से कन्वर्ट, बट इट्स क्रिएटिंग अ न्यू वर्जन। अब यहाँ पे ये इंटीजर जो है ना, ये नया वर्जन क्रिएट किया स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी आपने, हमने क्या किया था, देखिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये एक मेमोरी डायग्राम से समझना हमेशा, जब भी वेन एवर यू लर्न दी पाइथन, हमेशा उसको मेमोरी परस्पेक्टिव से समझना। ठीक है, सो कंसीडर 90 स्ट्रिंग थी जो यहाँ पे सेव, दिस इज एंड दिस इज पॉइंटेड बाय ए, राइट। ठीक है, व्हेन यू अप्लाई दिस ऑपरेशन एंड वी आर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, reassignment, this is reassignment. What's the meaning of reassignment? Reassignment means break this linking and create a new link and put the integer word, so ये था string and ये है अपना integer। तो उसको ध्यान से समझना इस बात को। यस, गेटिंग सेंस और नॉट? Okay, so I hope you're getting the sense. These are reassignment. Okay, so these are reassignment, a equal to 90, in 9, these are 90, 90, when we use this assignment operator means we are reassigning it, so old linking will be, will will no longer exist, now it's create the, now this equal to sign creates the new linking। Okay, this in memory, ये memory में this thing, this 90 string remain as it is in the memory। ठीक है, so I hope you get the sense of the memory management of conversion। अब देखिए एक और, what is this 100, okay 100, ये 100 है, but if I convert it, I'm getting the 100 integer, but if I apply 2 here, I'm getting 4, it means that I'm telling the integer this is the binary number, ये binary, this is a binary number 10, so means I'm telling this is a binary number, this is not a 100, take it binary number, so I'm getting 4। ठीक है, binary number, so this is, if you want to convert any binary number to the decimal number, so you can apply 2 here, so I hope this is new for you। ठीक है,
So please understand, this can be a good interview question. How to convert a binary number? So this is a binary. If you देखिए string में, in the string, what is this? You can say this is a 100 string version. You can say it's a binary but string version. So this base, ये base है, base will tell this is a binary or decimal. Okay. So I hope you get the sense. चलिए. It asking for enter the marks. So if I enter 90, that's okay. I'm getting the 90 marks. Okay. So I'm getting the integer version of this one. So if first condition, if marks greater than equal to 90, take a variable grade equal to A. L if marks greater than equal to 80, grade equal to B. L if marks greater than equal to C, at that condition grade equal to D. Oh sorry, यहाँ पे इस यहाँ पे मैंने मुझे लिखना है 70, सॉरी. ओके. और C grade. L if marks greater than 60, grade equal to D. Next is else. You can use else, grade equal to E in the else condition. Okay. So this else is working with this elif. Okay. If elif, 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 multiple ways, means the interpreter will choose one out of this six. Oh, sorry, five. Yes. Okay. One among these conditions. Okay. एक को, only one will be chosen. Even this one or this one. Okay. First try this one. If this is a fail, then check the second one. If this is fail, then check the third one. If this is fail, check this. Then then the interpreter will check the fourth. If everyone fails, then interpreter has to take this E grade. Okay. So at the end, I can print the statement f string. Okay. The marks of students are marks and grade is grade. Enter the marks 80. So I'm getting the B grade. Okay, B grade. Okay. So how? Let's try to understand. First, check this condition. Marks greater than 90, false. Then check the second condition, true. If this is true, then the interpreter never checks the rest of the condition. So final answer is B grade. So I hope you get the sense. Yes, any doubt, anyone? So this is the elif structure. Okay. So one question पूछ रहा है अवध, write a program to print the employee salary structure and input a basic salary 35 DA PF medical. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? We can write it. अभी यहाँ पे here I cannot see your question clearly, but it's very simple. Input a basic salary, ठीक है, 25 HT बना के उसका आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. सो एक बार कर लेते हैं इसको. अब अवध बोल रहा है तो कर लेते हैं. लेट्स सी. And we have just 2 minutes. Okay. So enter the basic salary, write a program to print the employee salary structure and input a basic salary. ठीक है, पहले आपकी basic salary वाला यहीं इसको कॉपी करते हैं. Let's copy it. Okay, make it here. Okay, input enter the basic salary. ठीक है जी, basic salary ले ली. So here I am taking the salary. Okay.
सेल कर लेते हैं, इट्स सो इजी टू राइट। 99, ठीक है जो भी है। एंड कन्वर्ट टू इंटीजर, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट्स मेक इट इंटीजर, डन, ओके। एंड देन एम्प्लॉय सैलरी इनपुट बेसिक सैलरी एंड 35% एच टी, डी ए, पी एफ, मेडिकल। तो भाई ये कहा, ये रिड्यूस करना है कि इंसर्ट करना है इसके अंदर, तो ये बताओ पहले मुझे। बेस सैलरी में ऐड करना है ना, तो सेल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट दी एच टी, जो भी होगा एच टी। तो सेल का 35%, तो सर 35%, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 35%? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 35%? सो वेरी सिंपल थिंग, जब भी हम लिखते हैं परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज मान लीजिए 20%, व्हाट्स सॉरी ऐसे नहीं, 20%, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20%? 20 बाय, यही ऐसे लिखते हैं। 80% लिखूंगा तो 80 डिवाइड बाय, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज में, सिंपल है। तो आप क्या करो यहाँ पे 35 ऐसे लिख दो, ठीक है। देन वी हैव डी ए सेल मल्टीप्लाई बाय 25 ऐसे लिख दीजिए। एंड देन पी एफ लिख लीजिए, पी एफ इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई बाय सेल डिवाइड बाय 100। ईजी हो जाता, बाकी कुछ नहीं, ईजी है वाइट करना। सो मेडिकल तो यार खुद लिख लेना, ठीक है, इतना मैं ऐड लेता हूँ 4.3 सेल मल्टीप्लाई बाय 100, फिर टी ए, आई डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टी ए, सेल 20 4.20%। तो ये आपके पास सब कुछ आ गया, राइट, ओके। तो एंड में क्या करना है, प्रिंट करना है आपको, जस्ट आपको एक नई सैलरी बनानी है, फर्स्ट सेल प्लस एच टी प्लस डी ए प्लस ई एफ प्लस मैड प्लस ई ए प्लस, ओके, ठीक है, देन प्रिंट फाइनल सेल। मान लीजिए उसमें डाला 50,000 बेसिक सैलरी, okay, consider this a basic salary, okay, so this one is the final salary. Yes, you can use 0.35, ठीक है, but sometime ना problem what happen, we put the dot here to here, little bit problem, so write as it is, just divide by 100, simple, okay. So I hope you getting the sense, okay, of the question, of the state, of the answer. So now let's proceed with new topic. So now I'm going to tell you about the loop. What's the meaning of loop? Yes, can anyone tell me what is the meaning of loop? Yes. Yes. Speak स्पेलिंग गलत लिख सकते हैं, चलो ठीक है। So we have two type of loop. देखिए, whenever we say in the general programming, so we say two type of loop. कौन कौन सी? Definite loop and indefinite loop. Definite loop means the number of steps, max number of steps are predefined. Definite by definite. Definite loop means number of steps are predefined, and indefinite means number of steps are not predefined, max number of steps. Okay. So when we talk about definite, so definitely we have for loop, and for indefinite we can use while loop. Okay. So we have two type of loop in the Python, for loop and while loop, and both are significant. Okay. So how to use these loop? So before jumping to the loops, we need to understand one function
that is the range. Range को समझना very necessary. So we need to understand the range. Okay, range. What is the meaning of range? Range means range gives you the sequence. Okay, range function gives the sequence. So what is the syntax of range? Syntax देख लेते हैं. Syntax is range. First is start by default 0 and necessary parameter step या difference बोल सकते हैं steps equal to 1. So this start point and step, these are the predefined. Default value is predefined 0 and 1, but this is necessary. You have to give this one. ये necessary है. This one is necessary. Okay, so this one is necessary. Okay, so now how to use the range? Consider if we give 10. So now I'm getting the expression. Okay, I'm not getting any sequence. I'm not getting any sequence. This is the expression. But if you apply any list or tuple over it, you will get the sequence. Now I'm getting the sequence. It means that I have given 10 here. What is the meaning of 10 here? They get 10. 10 goes to AND by default 0 and take one step. Start from 0, go to just less than 10, whatever the less than 10, and take one step. Right? Now consider if I give list range 2 to 20. Now I'm getting the number. नयन कह रहा है कि n minus 1. नहीं डियर, n minus 1 नहीं होगा. नहीं, no dear, it's not n minus 1. We cannot say it's n minus 1. I will tell you why. ठीक है? Don't take any assumption. Last number is n minus. No, it's not n minus 1. I will tell you why. Don't worry, I will give you the example. Okay, now first number is 2 because I have given explicitly this is 2. ये 2 है 2 and take one step. Okay, like this. Now I'm giving 3 number. Take 4 margin. Okay, start from 1. एक से 1 से शुरू करते हैं. Now I can see Nayan, you can see this number is less than, so less than n or not? 1 less than. This is the n and this 17. You can see it's n minus 3. Right? N minus 3 हो गया ना? So it's not n minus 1. You can say it's in mathematically if you want to set n plus step minus start. This may be, I don't know. You can try n plus step minus st. If this is less than the final number and less than तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा. ठीक है? चलिए. So 1, 5, 9, 13, 17. Okay. So take starting from 1. Last number is exclusive. Last number is exclusive. First number is inclusive, and take 4 steps. So this is the range function. अनूप कहता है कि एक्सप्लेन कीजिए 2 to 20. ओके, तो डायग्राम समझ में आ गया होगा. सो आई होप यू गेटिंग द सेंस ऑफ डायग्राम. So Anup, it means that 2 means starting point 2. This is 2 and 20 and is 20. So 2 to 20. So this first number is inclusive, 20 is exclusive. ये exclusive रहेगा. तो last number is exclusive and take by default one step. So ये बनेगा 2 to 20, one step. So 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 like this. Okay. So I hope you get the sense. Yes. Any doubt, anyone?
Any doubt, anyone? डिफॉल्ट है वो, ठीक है। चलिए, सो आई होप गेट द सेंस। हाँ, एक और बात है। सो कंसीडर, अब जो आपको यू, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द थिंग्स विच इज रेयरली प्रेजेंट ऑन द यूट्यूब और एनी डॉक्यूमेंट, रेयरली। आपको पैसा वसूल कर देता हूँ आज का, जो भी लगा है, ठीक है। इफ यू वांट टू गिव रेंज लाइक दिस, तो इंटरव्यू क्वेश्चन है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस 1 to 20. Now if I start 20 to 1, and this is not here, so can you tell me what would be the output? Yes, anyone? It's empty, nothing, null, right? Because we are saying go 20 to 1, but by default our traversal, you can say we go left to right direction. हम ऐसे जाते हैं ना, एक 1 से 1 to 10 जाते हैं, 1 to 10 मीन्स लेफ्ट टू राइट, ठीक है, 1 to 10, राइट। बट इफ आई से नहीं भाई, गो मीन्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफ आई से गो राइट टू लेफ्ट, सो वी हैव टू गिव हेयर नेगेटिव नंबर डियर। अब देखिए, नाउ वी आर गेटिंग दी रिवर्स, रिवर्स नंबर, ठीक है। यू कैन गिव हेयर बाई टेक 2 स्टेप बट रिवर्स डायरेक्शन। एक कह रहा है कि डिस्प्ले क्लीन नहीं है, क्यों भाई? देखें, लेट मी चेक व्हाट इज माई, नहीं, इट्स गुड इंटेंट, सो आई कैन सी क्लियर। यस, एनीवन गेटिंग द लो क्लैरिटी? इट्स क्लियर ना? मैं दूसरी जगह भी देख रहा हूँ, मैं क्लैरिटी बढ़ा के देखता हूँ, 720 करता हूँ, क्लैरिटी तो एकदम बढ़िया आ रही है, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज, सो रेंज डन हो गया, ठीक है। अब एक बात याद रखना, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, रेंज मीन्स we whenever we want the data from the range, we use list or tuple. Yes, we now you can see it's tuple. Tuple क्या है, list क्या है, I will tell you tomorrow with some knowledge क्या है list and tuple, ठीक है। You can apply tuple, you can apply list, you can apply another iterator things, but range gives the value when we use list, when we use tuple, when we use for loop. Now it's time for for loop. So for loop, what is syntax of for loop? लिस्ट कैसा, जिसमें चेंज कर सकते हैं, लिस्ट, इन द लिस्ट वी कैन चेंज, वी कैन मॉडिफाई, वी कैन ऐड द वैल्यूज, ओके। फॉर, बच्चों ने रट्टा मार लिया, फॉर आई इन रेंज, दैट्स ओके, नो इशू। फॉर दिस अ कीवर्ड, नेक्स्ट अ वेरिएबल, then in, and then iterator, iterator for variable in iterator, then indentation, statement 1, statement 2, okay, like this. So this is syntax of for loop, remember कर लीजिए, ध्यान रखना, ठीक है। So now let's apply for each in. So what is the meaning of each? That's a variable. You can use I, you can use j, you can use k, but I never use I don't use I, never, I don't use I, because there is a famous quote, don't put I in the loops, right?
don't put I in the loops. So use each. सबको लपेटे में लेंगे each, खुद को नहीं, I को नहीं, ठीक है ना, right? For each in range, okay, 1 to 5 in each 1 2 3 4. Okay, for each in range 1 to 5, print each. So I hope you're getting a sense of this syntax. Each means this is a variable. You can use any variable. This is iterator. Okay. So you can print 1 to 10. Now I'm getting the 1 to 10. One thing here, if you want to print in the horizontal fashion, horizontal, so you have to use and equal to whatever you want to give. Now I'm getting the horizontal fashion. So if you give here comma, I'm getting comma after each value. So I hope you're getting the sense. Yes. Anyone, any difficulty? Yes, anyone, any difficulty? No. So next is for loop with string. So consider I have a string. Okay, stir. So for each in python stir one, I'm getting the each vector. Okay, for each in str1 each. So I hope you get the sense. I can print each character. So this one, this string is iterator here. In the previous example, range was the iterator. Now this time string is the iterator. Okay, so I'm getting the each number, each character. Okay, so now if you have a list, you can use list as a iterator for each in. Yes, any doubt? Sir, I have one doubt. What does means? It means that अगर मैं ये नहीं लगाता, if I am not using this one, I am getting the horizontal value, sorry, vertical value. It means that and की जो by default value है वो new correct null this new line character है. It's a by default value of and is a parameter here, so by default value is new line. So I'm changing the behavior. Instead of new line, just put the comma. So after every line I'm getting the comma. Okay, so if you put tab, I'm getting the tab after every number. Means space आ रहा है, ठीक है. So yes, any doubt? So let's start. Let's create one program. Uh, Sum of first n numbers. Sum of first n numbers. N means 10. The first of n number means n plus. Or condition है n greater than 1. N plus 1 by 2. Okay. So let's see how to do this one. So first of all, I am taking a number n equal to 10. Right? N equal to 10 and some variable equal to 0 for each in range 1 to n 1 plus 1. Someone equal to someone plus each and at each
at each number is someone. So at 1 sum is 1, at 2 sum is 3, at 10 sum is 55. So let's understand how 55. So n value is 10, 10 plus 10 plus 1 by 2, 5. Now I'm getting the 55. So I hope you get a sense of this one. Okay. So if you are very new to the programming, what's the meaning of this one? This is a variable. Initial value is 0. Here, what is the value of someone? First iteration 0 plus each का 1. So sum कितना हो गया? New value of sum is 1. I'm getting 1 here. Right. So in the second iteration, second, previous value of sum is 1. Okay. Previous value of sum is 1. Now each became 2. 2 plus 1. New value of sum is 3. So I'm getting 3. In the third iteration, previous value of sum is 3. New value of each is 3. So 3 plus 3, 6. So in this way, it works. Right? Yes. Any doubt, anyone? No doubt? So now let's start. Now, so we have completed the for loop. Okay. F means formatted output. तो फर्स्ट डे की वीडियो देख लेना. You will get the sense what is the meaning of formatted output. ठीक है. So what if we assign a value to each variable? तो वही तो कर रहे हैं. So भारत योजना बोल रहा है. Amazon everywhere A comes in the string. I want to print nice how. I'm not getting your question. Amazon every time A comes in. अच्छा, ये तो बहुत easy है. So consider str1 is Amazon. For each in str1, if each equal to A, at that moment print nice. So 2 times nice here. So you want to print the each every time, so you can use each. You can see I'm getting the nice here. Okay. Yes. Any doubt, anyone? So you want to print इसके साथ में print होना चाहिए, तो you can also do that. एक काम कीजिए, इसको यहाँ पे लिखिए print each. ठीक है, फिर देखना. So यहाँ पे फिर else लिख दो आप. ठीक है, और यहाँ पे लिखो आप each. You are getting A nice, M A nice. So I hope you get in the sense. Yes. ठीक है. चलिए, so while loop करते हैं. While. So now it's time for while loop. In the while loop, let's see first program. So yesterday we wrote one program, the password matching program, right? If statement. Let's write it again. Pass one input. Enter the password. Enter the password. If pass one equal to Intel, at that moment we can print hello everyone. Else wrong password. Enter the password. If I write Intel, I'm getting hello everyone. If I use Dell, wrong password.
Can anybody tell me what is the problem inside it? क्या shortcoming रह गई है? What is the shortcoming? What is the limitation of this program? Yes. Anyone? What is the limitation of this program? Yes, anyone? So limitation is it can ask one time. Means if you type wrong password or right password, it it asks for password for one time only. So if you want that, if somebody enters wrong password, it should keep asking again and again. ठीक है, पासवर्ड तो चेंज नहीं होगा, हाँ पासवर्ड नॉट चेंजेबल, राइट, ये भी है. सो लेट्स डू दैट थिंग विद द हेल्प ऑफ while loop. So how to convert this program to while loop? Very easy. First line as it is, while. So what is the syntax of while loop? Let's see the syntax. 1 second. हाँ जी, देखिए while loop का syntax. Let's see the while loop syntax. While is the you can say while is the keyword, then here condition statement 1, indentation statement 2, 3, 4, 5, whatever. After completion of statement, the while loop, the interpreter check the condition again. If the condition is still true, then run the statement. After running the last statement, while interpreter again checks the condition is, if the condition is still true, then run the statement again. If condition false, come outside the loop. So condition is true. If this is true, then enters in the while loop. So what is our condition? Condition is if password is wrong, that's the true condition. So if password wrong means pass1 not equal to dear, not equal to the intel. If password is wrong, man, that's true, means start the loop, okay, and say wrong password. Wrong password. Wrong password. And the program should have the capacity to ask the password again, change the password again. So I'm putting this thing here, enter the password again. Done. If password is right means this condition false, come outside the loop and print a good message that welcome to the let's enter the password. So this is the indefinite loops because we cannot tell how much step the program will take. Simple सी बात है, ठीक है. So enter the password if password is there. But saying that wrong password and enter the password again, ठीक है. So मैं एक काम करता हूँ, let me enter the password. Let's wrong password, enter the password again, uh, enter enter the password again. So intel welcome to let's. So I hope you get the sense of while loop. Yes, anyone, any doubt? Yes, anyone, any doubt? चलिए. So next is next program, complete the same program, means find the n numbers, find the addition of no addition, find the sum of n numbers with while loop. अब while loop के साथ करना है, ठीक है. So we have already completed same thing. So I am leaving up to you कि आप कैसे करते हैं, ठीक है. So in the previous one यहाँ पे, हाँ नहीं ये नहीं है, this one integer, ये salary, this one is for loop, हाँ. So write this program with while loop, okay.
complete this program while loop. So please try this at your home after means इसको try करना, try this one. Okay, with the help of while loop you have to complete the same thing, sum of first n number, but with the help of while loop. Okay, so I hope you get the sense. ठीक है, तो ये हमने लूप स्ट्रक्चर कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग मोर विद द लूप. First is, so we will cover today break statement, continue, and else statement. So three statement we will cover within five minutes. What is the meaning of break statement? Break. Break means break the loop. Break the loop. So consider at any given point, if you want to break the loop, you can use break statements. Consider uh, I'm using a string str1 and Python programming. Python programming. So first is consider if you get two two नहीं इसमें नहीं बनेगा. If you get space anytime, if you get space anytime, break the loop. Space पे break करनी है space, and we know very well this is space. If anytime you get the space, break the loop. कैसे? For each in star1 print each. So I'm getting everything. So now we have to put a condition. If you get space at any moment, break the loop. तो उस condition में क्या करना है? If each equal to space, break the loop. Now I can see break the loop. We in this way we can break the loop. Okay. Yes. So break statement can be used in while loop as well as in the for loop. Okay. So I hope you get the sense. Okay. Tell me how many of you are from the computer science background? कितने हैं आप में से जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर? हाउ मेनी ऑफ यू पास आउट चलेगा बट कंप्यूटर साइंस या एमसीए भी चलेगा? यस, एनीवन? टेल मी इन द चैट बॉक्स, सो आई विल आस्क द क्वेश्चन. थर्ड ईयर मैथ नहीं, मैं सेकंड ईयर में हूँ. नहीं, अच्छा ठीक है, चलो सेकंड ईयर वाला से पूछ लेते हैं. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? पास आउट बीसीए. ओके. मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम बी टेक प्लस मास्टर्स, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एम फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी, एंड नाउ आई एम परसिंग PhD. आई एम ऑल्सो डेवलपर इन द सीनियर डेवलपर इन द कंपनी. Okay, so maybe I'm doing PhD in these days. Okay. No, it's not octogonal, it's a complexity. तो इशिका ने बहुत सही बोला, it's a complexity. ठीक है, complex time. Yeah, you are right. Complexity is a complexity. So whenever you write the program, so क्या चीज है? Whatever the things which will differentiate you from the different programmer, means other programmers. That means your optimization techniques, your code clarity, your complexity in the code. If you write the same code with less complexity, means your code will be selected, higher chance. So that differentiate you from the other programmers. Okay. So always, uh, whenever you write the program, please also take care the complexity. Okay. So अभी मैं discuss नहीं कर रहा, but I will discuss later if you join the course. Okay, I will teach you the complexity things. Okay, and data structure things. Not data structure, but deep Python in depth. Okay. चलिए. Break you know very well. Now it's time for continue. Consider I have a list. Consider I have a list. So if I use
each number for each in list 1. Print each. So I'm getting each number. Now consider if I divide D's answer and divide 100 divided by each. Print D. I'm getting error this time. ये error आ गया क्यों? Why am I getting the error? Can somebody tell me why? Yes, anyone? ओके एरर बिकॉज डिवीजन बाय जीरो. अच्छा उधर दिख नहीं रहा, सो मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ. सो आई अब दिख रहा होगा. ठीक है, डिवाइड बाय जीरो, दैट्स अ डिवाइड बाय जीरो. सो कंसीडर समबडी टेल मी ओके एट दैट कंडीशन ना आप यू कैन यूज वन थिंग. इफ d1 इक्वल टू जीरो एट दैट मोमेंट ब्रेक द लूप. चलिए आपको ब्रेक याद था, आपने ब्रेक कर दिया. d1 इक्वल टू जीरो ब्रेक. Oh, sorry, not d1, it's each. So we applied break. ठीक है, I'm not getting error, but problem क्या है? I'm getting the answers for 1 2 3 4, but not for 3, not for 4, not for 5. चलो इसको 30 कर लेते हैं. 30 and 40. I'm not getting the answers for this 30, 40 and 50, right? So first zero में ही break आ गया. So break, we are not getting the answer. ठीक है, program is working fine, but we are not getting the answer. We are not getting the desired output. So in this condition, we use the statement, not the break, that's continue. What's the meaning of continue statement? It means that skip the rest of the iteration and continue with the next one. Skip rest of the iteration, rest of the execution. Whenever interpreter execute the continue statement, it means that भाई आगे मत जाओ, don't go further, यहीं से ही नया iteration पे आ जाओ. Means don't go further, continue with the next iteration. Okay. So if you run this program, now this time you are not getting the error. We successfully skipped the zero. Okay. Please remember. Okay. So I hope you get in the sense of continue. Now it's time for, so you can use continue statement with while loop, with for loop, but with only the loops. Okay. So I hope you get in the sense. Now it's time for else. Else तो हमने कल भी देखा, आज भी देखा. Now else फिर से आ चुका है. Else with loops. तो क्या मीनिंग है? What is the meaning of else with loop? क्या मीनिंग होता है? What is the meaning of else with loop? Yes, anyone? Else with loop. Whenever we use else with loop, it means that भाई इसका मीनिंग है. What's the meaning of that? No break statement. No execution of break. No break statement means no execution of break statement. No execution of break statement. No execution of break statement. It means that. Okay. Now let's see how it works. So I hope you get a sense of else. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल if नहीं else with for loop. Dear, this time I am going to use else with for loop. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. वैसे आई हैव वेरी गुड एग्जांपल प्राइम नंबर, बट उसमें आप खुद ही उलझ जाओगे. सो लेट्स टेक वेरी सिंपल एग्जांपल. ट्राई टू थिंक.
हाँ चलिए, कंसीडर, लेट्स टेक वेरी सिंपल एग्जांपल 1 2 3 4 5. Now it's time to check करना है. So in this one we will check, do we have any zero in this loop or not. अगर जीरो है तो वहीं पे रुक जाए, डोंट गो फर्दर. So we need to, our condition is find any zero, find any zero. If there is a zero, stop that time, stop. Okay, and tells yes zero find, और बताना भी है कि जीरो मिल गया. ओके बताना भी है. सो इफ यू फाइंड जीरो, स्टॉप एंड टेल जीरो फाइंड, मीन्स दिस लूप कंटेन्स द जीरो. ये बताना है दिस लूप कंटेन्स द जीरो. So this is a condition. Means in this loop, if there is a zero, check there is a zero or not. If there is zero, stop the loop and tell zero find. ठीक है, ऐसे करना है काम. तो let's see. हमने क्या किया? So for consider BWD को करना था. BWD is 100 and D1 equal to BW bandwidth divided by the number each. Okay, and we are checking if each equal to 0, then break the loop. But before the break, tells the list contains 0. List contains the 0. Print the. So now whenever we get the 0, चलिए इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको मैं रखता नहीं. चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ. इफ यू आर थिंक ये BW कंफ्यूजिंग कर रहा है, दैट्स ओके, नो इशू. आई एम गेटिंग स्टेटमेंट list contain 0, but consider if list doesn't contain any 0, that means हमें प्रिंट करना है कि 0 नहीं मिला. ओके नैन, सो वी विल से कि 0 नहीं है. तो वेयर टू राइट, जीरो नहीं मिला. इफ वी आर नॉट गेटिंग जीरो, वी कैन से कि जीरो नहीं है. सो अगर आप सोच रहे हो कि राइट हेयर एल्स, आई एम गेटिंग एवरी टाइम नॉट गेटिंग जीरो, नॉट गेटिंग जीरो, नॉट गेटिंग जीरो, नॉट गेटिंग जीरो. ठीक है, इफ यू आर गेटिंग जीरो ओवर हेयर, आई एम गेटिंग नो गेटिंग जीरो, नो गेटिंग जीरो, बट एट द एंड आई एम गेटिंग दी जीरो. देखिए थोड़ी सी इशू है यहाँ पे. क्या भाई जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सो वी आर गेटिंग जीरो नॉट, सिंपल से मीनिंग है. आर वी गेटिंग जीरो नॉट, आप बोल रहे हो कि मिल भी रहा है, नॉट गेटिंग, और एंड में कह रहे हो कि मिल भी रहा है. रियलिटी तो है कि जीरो है, बट टेल ओनली वन टाइम ना. पहले आप बोलते हो नॉट गेटिंग जीरो, नो जीरो गेटिंग, बट हेयर यू आर सेइंग कि हाँ जीरो है. तो कहाँ पे एल्स लगाया जाए? प्रॉब्लम ये आती है कि एल्स कहाँ पे फिट किया जाए. एनी आंसर, एनी वन? सो इसको सी लैंग्वेज में करोगे तो इजी, वो उसमें भी कर सकते. इन द सी लैंग्वेज वी कैन यूज दैट, बट हेयर वी कैन डू विदाउट यूजिंग द, वो जो मेथड चलता है कि एक फ्लैग लगा दो यहाँ पे, फ्लैग रख दो यहाँ पे जीरो, एक फ्लैग रख देते हैं. इन सी लैंग्वेज में कैसे करते हैं? आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू इन द सी लैंग्वेज या जावा में. एक ले लेते हैं यहाँ फ्लैग ले लेते हैं. ठीक है, उसमें क्या करते हैं फिर, देन वी चेंज द फ्लैग वैल्यू इक्वल टू हेयर जी1, और इसको नहीं लिखेंगे बाहर, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं इफ फ्लैग वैल्यू, बाहर लेते हैं इफ फ्लैग की वैल्यू अगर जीरो ही रही, मीन्स वी कैन से नो जीरो. Here we are getting zero, the list contains zero. ठीक है, नो जीरो, सो इट्स वर्किंग फाइन, इट्स वर्किंग फाइन. सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है. आई विल टेक 1 2 or 2 more minutes. Flag is a variable, flag just a variable. You can take flag 1, flag 2, flag each, whatever the variable you want to take.
इसकी वैल्यू जीरो है, स्टार्टिंग जीरो. इफ वी गेट each zero means if any zero is there, then the flag become one. फ्लैग की वन हो जाएगी. अगर ये मीन्स देर इज नो जीरो इनसाइड इट, फ्लैग विल रिमेन जीरो. if flag is zero, then print no zero. सिंपल सी मीनिंग है. समझ में आई बात? यस, टेल मी. गेटिंग सेंस और नॉट? Yes, yes, tell me. Getting sense or not? Okay, so I hope you're getting sense. Now, how to use else? अब वापिस आते हैं अपनी बात पे. इसके ऊपर else. इसको else से कैसे कर सकते हैं? So I am repeating the same stuff over here. Okay, I am repeating the same stuff over here. ठीक है. अब no need to use flag. इस flag को उड़ा दीजिए. So no need to use flag. Remove this flag. इसकी भी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत नहीं है. So no need, just use else. No zero. If we put zero, I'm getting the list count. Means same thing I can achieve without using those variable. अब ये जो else है, this else is not coming with this one. ये इसके साथ नहीं है. ठीक है, getting sense? This else is not with this. इसके साथ नहीं है भाई, ये इसके साथ नहीं आ रहा. Because this is inside the loop, this is outside the loop. It means that this else is coming with for loop. ये for loop का part है. अब for loop का part कैसे? How? It means that, please see this statement, no break statement. It means that, अब ध्यान देना है, it means that if there is no execution of break statement, if there is no execution of break statement, then the interpreter execute the else block. फिर से सुनिए ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं. इफ देर इज नो एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, अगर ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया गया एक बार भी, मतलब एक बार ही होगी, उसके बाद तो ब्रेक हो जाएगा. इफ देर इज नो एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, देन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट दी एल्स. अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तभी एल्स ब्लॉक बाहर जो रखा है फॉर लूप में वो एग्जीक्यूट होगा. तो आई होप यू गेट द सेंस. तो एल्स को वाइल के साथ भी यूज कर सकते हैं. एल्स कैन बी यूज्ड विद द वाइल लूप. सो आई होप यू today you have learned something significant. Yes, tell me. Getting sense or not? So मैं इसको हटा देता हूं so that you can get the clear idea. So today we covered the for loop structure. तो कुछ प्रोग्राम आप बना के देखना, जैसे how to find the prime number. तो इसको बना के देखना प्राइम नंबर प्रोग्राम को, एंड डोंट चेक ऑन द इंटरनेट. सब फॉर लूप वाइल लूप से हो जाएगा. ठीक है. सो प्लीज नेट पे चेक मत करना, जस्ट यूज द फॉर लूप वाइल लूप एंड गेट द मैथमेटिक्स बिहाइंड द हाउ टू फाइंड द प्राइम नंबर. ये कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है. 11, 121, 49, 60, 61, 71. इफ यू टेक दिस नंबर, तो कौन सा प्राइम है, विच वन इज प्राइम, विच वन इज नॉट प्राइम. प्राइम क्या होता है? जो अपने सिवा किसी से एग्जीक्यूट नहीं, डिवाइड नहीं होता. That means prime number. So find the prime number. Okay. So I hope you get a sense of today's lecture and you have learned something significant. And bye bye everyone. Bye bye. Good night. And thank you for being with me today. Bye bye. Okay. Let's upgrade team. Done.